Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz session, and in this session we discuss some of the very important current affairs questions in question and answer format, right? So let's get started with the question and answers of 16th December's current affair, right? The first question is with related to the Department of Public Enterprises. Consider the following statements. It formulates policies pertaining to central public sector enterprises and collects and maintains information in form of public enterprises survey. This is the one statement number one. It works under the Ministry of Commerce and Industry. The second statement is not true because it is the department under Ministry of Finance, right? So let me discuss here first what is this public enterprises policy, new policy. So this new policy, that is PSE policy, this PSE policy came in line with the Atmanirbhar Bharat. We recently released this policy. Under this policy, these PSEs are classified in two sections, right? The first is strategic sectors and the second is non-strategic sectors. So strategic sector में आपके पास होंगे, for example, this is atomic sector, then space, and then defense, right? The first one is, the second is telecom and transport, telecommunication and transport. Then your power sector, coal sector, and other important minerals, right? And then banking and insurance. Right, these are four strategic sectors. यानी कि ये जो PSEs होंगी, public sector enterprises, they will come under strategic sector. Now, what is the aim of this PSE policy? The PSE policy का aim है that the minimal representation or minimal presentation of the government in these areas. मतलब इन companies का जो efficient है वही चलती रहे. Rest of the companies जो है PSE जो है, they can be used for the disinvestment or the asset monetization उनका हो सके because of their inefficiency, right? या फिर closure भी किया जा सके. Now remember one thing, the only exception in these two sectors जो है इसमें classify नहीं किया जाएगा, those PSEs which are aimed at some other social development related aim, right? For example, if a industry is there in a very remote and tribal area, तो उसका एम होगा फॉर द रीजनल डेवलपमेंट, फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट फॉर दैट एरिया, राइट? तो वो इसमें आपके नहीं आएगी. दीज आर रेस्ट ऑफ द जो आपकी PSEs हैं उनको क्लासीफाई किया गया है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, राइट? नाउ इन दिस नॉन स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर है, रेस्ट ऑफ दीज इनके अलावा जो सेक्टर होंगे दैट दे विल बी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स. सो इन दीज नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ this public enterprises, that is DPE, and this works under Ministry of Finance Ministry, right? So Department of Public Enterprises is envisaged with this aim to identify which PSEs are to be closed, which PSEs are inefficient, and which PSEs are can be taken for the asset monetization also, right? So this is the duty of this DPE, and DPE is also the body which makes this public enterprises survey. So this is about the DPE. So this one statement is true, but this is not true because it is under Ministry of Finance. So statement one is the answer for this one. Now after the identification क्या होगा, जब हमने इन्होंने DPE ने identify किया कि this company or this PSE is to be disinvested और privatization होना चाहिए और closure होना चाहिए, then they will recommend this in PSE to the Cabinet Committee on Economic Affairs, right? And after the approval of this CCEA, ठीक है, तो यहाँ पे DPE will create a PSU, right? SPV, Special Purpose Vehicle, for that further proceeding of disclosure or and all, ठीक है? तो यहाँ पे ये बनाएंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है. एंड फाइनली अगर इसमें डिसइन्वेस्टमेंट होना है या फिर एसेट मोनेटाइजेशन होना है तो दिस विल आल्सो बी रिकमेंडेड टू DIPAM, that is Department of Investment Promotion and Asset Monetization, right? After the approval of this CCEA. So this is the role of Department of public enterprises, to identify these non-strategic sectors for the privatization, for the closure, for the disinvestment, for the asset monetization, right? So this is all about this question. The answer would be one only.
Coming to the next question, with reference to GrapeNet, consider the following statement. It is an initiative of Grape Export Promotion Council. It is an internet-based residue traceability software system for monitoring fresh grapes exported from India to the European Union. Now, इन एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, द मेन प्रॉब्लम फ्रॉम इंडियन साइड इन एक्सपोर्ट इज द सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी प्रॉब्लम्स, राइट. सो आपने पढ़ा होगा अल्फांसो जो मैंगोज थे इंडिया के, दे वर बैंड from these European countries and on the measures of phytosanitary measures, right? Phytosanitary measures. अब यहाँ पे क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं they used to say because of India's these agro products we are facing the problem of paste, है ना, उसमें paste आ जाता है and they are kind of rodent one, ठीक है. तो इसको दूर करने के लिए इंडिया की this is not the Grape Export Promotion Council, that is APEDA, right? This is APEDA, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसका ये प्रोग्राम है, दैट इज ग्रेपनेट. एंड नाउ दिस इज द एम ऑफ दिस ग्रेपनेट. एक्चुअली दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्यों है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फार्म, राइट, एंड फ्रॉम हेयर यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट द ग्रेप्स. And now this is the end customer, right? So this customer will have the all data कि जो आपका product है, how this product is traveling and wherever there is mutation या फिर कहीं भी कोई change आता है, that will be identified by this person, ठीक है, because of this blockchain technology. So blockchain technology जो है, इसका main जो concept ही यही है कि this is decentralized one, यानी कि कोई भी access कर सकता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड वन. एंड दिस इज इम्यूटेबल लेजर. इट इज अ काइंड ऑफ इम्यूटेबल लेजर, यानी कि अगर कहीं भी म्यूटेशन होता है, चेंज होता है, दैट विल डेफिनेटली बी सीन बाय दिस एंड कस्टमर, ठीक है. सो द ट्रेसेबिलिटी इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ दिस ग्रेपनेट प्रोग्राम, ये ध्यान रखना आप, ठीक है. सो नाउ फ्रॉम हेयर टू हेयर अगर बीच में कहीं भी कोई चेंज होता है, म्यूटेशन होता है या चेंज होता है, दैट कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड बाय नॉट ओनली बाय दिस APEDA और बाय दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम, बाय द एंड कस्टमर itself also, right? So this is the GrapeNet program. So the statement 1 is not true, but this is true. Internet based residue traceability, ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स बहुत यूज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्टिलाइजर यूज समटाइम्स दीज पेस्ट these fertilizer residues are there, sometimes pastes are there. So to identify that residue in this exported item, so this is the software, right, that is GrapeNet. So 2 is the answer, 1 is incorrect one. This is the program of APEDA. Now coming to the next question, that is which of the following recently added in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity? And that is the Durga Puja, which has been acknowledged by the UNESCO. So this is the UNESCO's convention of 2003 to protect the intangible cultural humanity sites, right? So this has given the recognition to our Durga Puja in the area of this ICH. We have this 14th program under this ICH. ठीक है, this is the 14th intangible cultural heritage under this intangible heritage, right? So इसके पहले भी हमारे पास जो है 13 और थे. This is the list, and recent one थे कुंभ मेला, Navroj festival, yoga, and you can also see this in Sankirtan, Buddhist chanting, Vedic chanting, Ram Leela, ठीक है. So these were 13 earlier intangible cultural जो हमारे पास recognition थे, and this was the 14th one. So you have to remember that one. Remember this is the convention where the India is also the signatory. अब बात आती है कि what is intangible. Something like expression, some customs are there, some representation is there which is going to be transmitted from one generation to other generation, and that is very very important for the humanity, ठीक है. तो उनको हम intangible जो assets में count करते हैं, and India is the signatory to protect them. So इसीलिए हमें ये recognition भी मिला है, right? India भी काम करता है इसके लिए, and ये UNESCO ने हमें recognize किया है. Okay, so this is the question number. Next question is with reference to Great Indian Bustard. Consider the following statement. It is endemic to Indian subcontinent. They are herbivores
and it is listed as critically endangered in the IUCN's red list, right? So this is not true. They are omnivores actually, not herbivores, right? So this second can be eliminated. If you will eliminate this second option, the only option you are left with is 1 and 3. Let me discuss here, this one here. So this is true. This is found in the area of, especially this area, that is Rajasthan and Gujarat. Rajasthan, Gujarat, and some areas, some pockets of the Pakistan also, right? And इसीलिए ये लिखा हुआ है Indian subcontinent, right? Not India. अगर लिखा होता it is endemic to India only, then ये गलत होता, but Indian subcontinent पे पाकिस्तान भी आ जाएगा, ठीक है, जो subcontinent है. So that is true, one is true. Now अगर और देखेंगे आप तो राजस्थान, गुजरात, and from apart from this राजस्थान and गुजरात, somewhere here महाराष्ट्र, देन आपका थोड़ा सा कर्नाटका, एंड देन आंध्र प्रदेश. सो ग्रेट इंडियन बस्टर जो है वो यहाँ पे पाया जाता है. रिमेंबर दिस इज नॉट कन्फाइंड टू राजस्थान एंड गुजरात ओनली, बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश दिस बर्ड इज फाउंड. नाउ this bird is the state bird of the Rajasthan and this is critically endangered bird. ठीक है, less than 150 numbers are remain now. So अगर हम बात करें GIB की, Great Indian Bustard, so this is the state bird of Rajasthan, state bird of Rajasthan, and राजस्थान में one desert national park is famous for its conservation. यहाँ पे पाया जाता है desert national park, that is in बाड़मेर and जैसलमेर, बाड़मेर एंड जैसलमेर, ठीक है. बिकॉज ऑफ द बॉर्डर एरिया, ये दोनों ही बॉर्डर पे हैं विद द पाकिस्तान, सो हंटिंग प्रॉब्लम इज देयर. ये जो बर्ड हैं कभी कभी इधर की तरफ जो है ट्रेवल करते हैं पाकिस्तान साइड एंड दे आर हंटेड डाउन, एंड दिस प्रैक्टिस इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, वेरी ह्यूज थ्रेट फॉर देम, फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑल्सो. द सेकेंड थिंग इज कि वहाँ पे वाइल्ड डॉग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. एंड थर्ड जो है इनके जो ग्रासलैंड हैबिटेट है दैट इज़ डिटीरियोरेटिंग एट अ वेरी फास्टर रेट, जिसकी वजह से ये कम होते जा रहे हैं. अब इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें GIB की तो दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है. critically endangered यानी कि 90% of the population have been lost in the last 10 years. This is the criteria of critically endangered and only 50 adult individuals are left, ठीक है. और जो endangered होता है that means 70% of their population have been lost in last 10 years and 250 individuals are left. अगर 250 से कम हो जाते हैं दैट विल कम इनटू क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो ये अभी 150 के अराउंड बचे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी राइट नाउ. इसके बाद अगर कुछ प्रोग्राम्स और आप देखेंगे दैट इज साइट्स. इन साइट्स दैट इज कन्वेंशन ऑन जो आपकी स्पीसीज होती हैं स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीसीज, उन पे प्रोहिबिशन के लिए साइट्स कन्वेंशन है. अंडर दिस अपेंडिक्स 1 जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है उसमें आता है GIB. एंड व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, यहाँ पे भी अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है. मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसी इट इज. एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, यहाँ पे जो शेड्यूल 1 है that provides a kind of absolute protection. यहाँ पे अगर आप पाए जाते हैं in the practices of trade या फिर hunting कुछ भी related to the GIB, then this will be non आपका bailable offense होगा, ठीक है, under this schedule 1 of WPA 1972. So this is all about GIB. So answer would be this is true Indian subcontinent, but this is not true. So 2 को eliminate किया, only option left is 1 and 3. This is also true, critically endangered है, that is also true, right? Coming to the next question, that is with reference to National Leprosy Eradication Program, consider the following statement. It is a centrally sponsored scheme under the National Health Mission, that is true, right? Aims to eliminate the leprosy in each district by 2025. This is 2030, not 2025, right? So this is not true. The option 1 is the answer. Let me discuss here about some points about this program. That is the under National Health Program. This policy is centrally sponsored scheme. The first thing is means यहाँ पे contribution होगा of center and state दोनों का in funding में, जैसे कि for example 60-40, 60 from center and 40 from here from the state, or 75-25. So this kind of share would be there under this centrally sponsored scheme. Now coming back to this disease, that is leprosy. This is also known as Hansen disease. Hansen disease. This is basically a neurological disorder, ठीक है, न्यूरो से रिलेटेड ये आपका डिसऑर्डर है. Now the
दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, राइट, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरिया लेप्राई, Mycobacterium leprae, right? So this is a bacteria caused disease. The problem with this disease is the gestation period या फिर incubation period. ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है and it is very difficult to identify this disease at earlier stage. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं and this is the problem with this disease. Now what is the aim of India? To eradicate this disease at least by 2030 and इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट. सो दिस इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम. अर्ली डिटेक्शन करना है हमें. इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज, अगर आप रियल टाइम रिपोर्ट जनरेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज निकुस्ट. ठीक है, निकुस्ट पोर्टल इज रियल टाइम रिपोर्ट जनरेशन, जो आपकी रिपोर्ट होती है तुरंत आ जाए. फॉर दैट निकुस्ट प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो देयर, राइट. सो दिस इज अबाउट दिस leprosy. So this is a centrally sponsored scheme, that is true, under National Health Mission. Yes, that is true, National Health Mission it is. And this is to eliminate the leprosy by 2030, not 2025. So one only is the answer, right? So this was the क्विज सेशन ऑफ टुडेज, राइट. आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा. अगर ऐसा है तो इसे शेयर एंड लाइक कीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन, यू कैन कमेंट दैट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इनिशिएटिव. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.